Hello and assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. And assalamu alaikum to all of you. आज कैसा गुजर रहा है? हफ्ता कैसा गुजरा आप लोगों का? किस तरह से वीकेंड गुजरा? जल्दी जल्दी बताइए, मैसेजेस करिए. We've run a tad bit late today because हमारे गेस्ट जो हैं वो दुबई में हैं currently और वो कुछ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से हम जो है वो इंतजार कर रहे थे, बट देन वी थॉट वीड गो ऑनलाइन एंड वीड स्टार्ट आवर शो जब तक कि वो हमें ज्वाइन करते हैं. अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि मुझे आपने बताना है मूड एलिवेटर पे आज सबका मूड कैसा है. देयर हैज बीन अ लॉट गोइंग ऑन, आई नो. और सबसे ज्यादा इससे पहले कि हम किसी और चीज के बारे में बात करें और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि है टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर स्पेशली इन पाकिस्तान, मैं चाहूंगी कि हम सब जो है वो एक बारी जरूर अपनी सॉलिडारिटी शो करें टू एवरीवन. करंटली इस वक्त क्योंकि कोविड का second lapse चल रहा है दोबारा से, it has hit us so bad as a community also and also all across the world. So here's wishing that we are safe, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत ख्याल रखना है. We have to be very careful about us and ourselves. So please हाँ, social distancing का ख्याल रखें. और ऑनलाइन क्योंकि सब चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, तो ऑनलाइन ही कंटिन्यू करें और इसी न्यू नॉर्मल को अब नॉर्मल समझ लें, है ना. अच्छा, और मूड एलिवेटर पे बताएं मूड कैसा है. मैं आपको बताती हूँ मेरा मूड जो है आज क्यूरियोसिटी से तो डेफिनेटली ऊपर है और मैं बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ जो मेरे पास हैं. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मोहम्मद. प्लीज स्टे विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ताकि हम जो है वो आज जो जरूरी टेक्नोलॉजिकल बातें करने वाले हैं इंशाल्लाह, आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंस्पिरेशनल. In fact, I'm confident it's going to be a very inspirational program for everybody to watch. Chilly है कराची में, unlike it's been very cold. Punjab, Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa, all of the other areas, northern areas of Pakistan, बहुत बहुत ठंडा है. So I hope everybody is enjoying the chilly winters and everybody is having good fun with the weather as well. बट अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताना है कि हमारे एंड पे मेंटरिंग हब में पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ. और एक हफ्ते पिछले जो हमारा जो वीक गुजरा वो पॉजिटिव भी था, इंस्पिरेशनल भी था, बट एट द सेम टाइम काफी चैलेंजिंग था. और मुझे ये पता है कि हम सब आजकल कुछ ना कुछ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सब चीजें जो हैं वो एक नए नॉर्मल पैराडाइम का हिस्सा बनती जा रही है. तो वो अपने चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन हमने जो जैसे एक रैप अप ऑफ द ईयर होता है, जो क्लोजिंग होती है, वो क्लोजिंग हमारी कुछ इस तरीके से गुजर रही है कि हम जो है वो अपने MOUs, अपने वे फॉरवर्ड्स, अपने कैलेंडर प्रोग्राम्स सब साइन अप कर रहे हैं, कैलेंडर सील कर रहे हैं for 2021. So me and my team are superbly excited. We will have new faces coming up, joining our teams as well within 2021. So हाँ, बहुत सारा कुछ हो रहा है. Sami Babar, अस्सलाम वालेकुम, thank you so much for joining us. बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग संडे को टाइम निकालते हैं हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सोलफुल संडे को. और सोलफुल संडे ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है माशाल्लाह, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी. और मैं हमेशा अपनी लिंक्डइन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम अगेन बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू join the program although knowingly that you are not familiar with the language of Urdu. और हम इसको bilingual रखते हैं, we keep it bilingual. Why? Because हमारे पास बहुत mixed community है. Merry Christmas to the community who's going to be celebrating in December also. So वहाँ पे भी तैयारियां चल रही हैं, मिक्स चल रहा है, सारे कुछ सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है. इसी के साथ साथ आज जो मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव फील कर रही हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्यूरियोसिटी तो ऊपर ही है मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं जो मेरे जहन में है. और मैं वेट करूंगी कि हमारे एक्सपर्ट जब हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे जरूर सवाल पूछूंगी. लेकिन इन द मीन वाइल मैं चाहूंगी कि आप लोग हमें सवाल पोस्ट करें यहाँ पे और हमें बताएं
what would you want to know? कौन सी ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी के बारे में जो आप लोगों को अभी भी बॉदर करती हैं? जो मैं आप लोग से अपना शेयर करना चाह रही हूँ इनहिबिशन, वो ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को लेके हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपरबली ग्रो कर रहा है, और विद इन द पास्ट फ्यू इयर्स स्पेशली हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी का फोकस है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, और जो दूसरे कंसर्न्स का फोकस है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का कंसर्न है, स्टार्टअप्स इतने सारे टेक में आ गए हैं, और टेक के स्टार्टअप्स के साथ साथ कुछ नाम भी हैं जो मेरे बिल्कुल जहन में आ रहे हैं, स्पेशली खवातीन, जिसमें शमीम रजानी और फायजा यूसुफ भी हैं माशाल्लाह, जो इतना ब्रिलियंट काम कर रही हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ साथ बहुत सारे मैच्योर ग्रुप्स हैं जो कि अपस्किलिंग में काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं जो कोडिंग में लगी हुई हैं. सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, बट माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द फैक्ट कि इट इज फॉर अस एज अ कम्युनिटी वेरी वेरी एसेंशियल, और आप लोग अग्री करेंगे मुझे पता है, कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें या ये इवेल्युएट या एनालाइज करने की कोशिश करें कि हम किधर खड़े हैं एज अ कम्युनिटी, ठीक है ना, और कहाँ इसको लेके जाना है 2021 में. मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट ले रही हूँ और समी बाबर का सवाल का जवाब देना चाहूंगी. हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट? समी बाबर, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, प्लीज सेंड अस एन इनबॉक्स. मुझे इनबॉक्स कर दीजिए मेंटरिंग हब के फेसबुक के पेज पे with your contact number and your email address, and we will get in touch with you, and probably I'll end up calling you inshallah, and we will try and see how we can make sure that you can become a part of our projects. We'd be more than happy. And मैं यहाँ पे opportunity लेना चाहूंगी सबको इनवाइट करने के लिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर माइंडफुल कम्युनिटी. इसीलिए हमारा माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट क्लब जो है वो फॉर्म किया गया है, और अब माइंडफुल स्किल्स डेवलपमेंट क्लब का 2020 का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशनल नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है. जी हाँ, इंफॉर्मेशनल नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है जो कि वर्चुअल होगा, और उसकी डेट्स मैं जल्दी जल्दी अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह. विद इन दिस वीक आप लोग जो हैं वो पोस्टर्स भी देखेंगे, और आप लोगों को इनवाइट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे. तो हम अपना ईयर जो है वो रैप अप करेंगे, बट एक बहुत प्यारे नोट पे रैप अप करेंगे, ताकि जब हम 2021 बिगिन करें तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन नोट पे शुरू करें. और आपको पता है हमारा थीम क्या है? हमारा थीम जो हमारी नेटवर्किंग इवेंट का है, जिसमें माइंडफुल स्किल्स क्लब के मेंबर्स भी होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी. थीम है सोहनी धरती अल्लाह रखे. हाँ, आई रियली वांटेड अस टू गेट टुगेदर एंड वर्क ऑन म्यूचुअली डिस्कसिंग विद ईच अदर. क्या गोल्स हैं हमारे, क्या देना चाहते हैं हम अपने आप को, what storyboards do we want to create, हम क्या करना चाहते हैं for ourselves and our community in 2021. सो उसके ऊपर फिर मैं जो हूँ वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब पोस्टर्स शेयर होगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो प्रोग्राम और नेटवर्किंग इवेंट जो है वो कैसे होने वाला है, और आप लोग कैसे उसका पार्ट बन सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम शर्जील अहमद, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन करा. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एट फेस, और आपसे कनेक्ट करके अच्छा लगा. Okay, Imran Khan Hara is saying that in Balochistan our youth doesn't know coding. Imran, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसके वजह से I understand the fact and my team does so too, कि हमारे लिए बहुत जरूरी है इमरान that we start working on how to connect better and how to connect best with technology and the advances in 2021, है ना. तो ये जो आपने मुझे बताया कि in the universities they're teaching old languages and coding, मैं आपको एक बात बताऊं इमरान, not just Balochistan, you would be surprised, पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस में इस वक्त भी जो आईटी के कोर्सेज कराए जाते हैं या जो चीजें कराई जाती हैं, जो बच्चों को सिखाया जाता है इमरान, 8th ग्रेड के हों, 6th के हों, 5th के हों, 4th के हों, जितने भी अच्छे स्कूल्स हों, जितनी भी टॉप मोस्ट ब्रांड्स हो जाएं, ये बात बिल्कुल डाउटफुल नहीं हूं मैं बोलते हुए कि हम अभी भी वो चीजें बच्चों को नहीं सिखा रहे, स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रहे इमरान, जो कि जरूरी है फॉर देम टू बी
टू बी हैविंग द एबिलिटी कि वो 2021 में उसके बाद सर्वाइव और थ्राइव कर सके ना. तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, एंड विच इज वाई मैं आपको एक गुड न्यूज भी देना चाहती हूँ कि मेंटरिंग हब जो है वो बलूचिस्तान में एक्सपैंड कर रहा है. जी हाँ, हमारा विंग एक्सपैंड कर रहा है बलूचिस्तान में, और हम बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं. we're in the process of developing and working on the needs and customizing programs ताकि हम बहुत सारे इंशाल्लाह नीड्स को कवर कर सकेंगे. अच्छा, इमरान खान ये भी कह रहे हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड विद लर्निंग कोडिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट. इमरान, आपको पता है हम मास्टर क्लासेस लेकर आने वाले हैं जो कि वर्चुअल होंगी, और वो हमने वर्चुअल इसलिए रखी हैं ताकि सब लोग जो है वो चाहे कहीं पर भी हों, आप अपनी कन्वीनियंस पे ऑनलाइन जो है वो वर्चुअली क्लासेस अटेंड कर सकें. लेकिन मास्टर क्लासेस का जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो ये कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नेशनल भी होंगे इंटरनेशनल भी होंगे, ये लाइव डिलीवर करेंगे अपने सेशंस, और इन सेशंस के बाद आप जो है वो किस एबिलिटी को ले सकेंगे, किस स्किल को अपना सकेंगे. जो स्किल आपको मिलेगा वो ये कि जितने हमारे मास्टर क्लासेस, जितने जॉनर्स और जितने फोकसेस को लेकर आ रहा है, वो मास्टर क्लासेस का इंटेंशन और विजन यही है कि हम जो है वो अपनी कम्युनिटी को ये सिखा सके, ये बता सके. हमारा एक्सपर्ट किताब के अलावा जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल फील्ड इंफॉर्मेशन है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं काम, कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो सब आप सीख सकेंगे. तो फिर हम शेयर करेंगे इमरान डिटेल्स. मे बी यू कैन इनबॉक्स अस योर कॉन्टैक्ट एंड योर ईमेल एड्रेस एज वेल, एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपको अपने ईमेल लिस्ट का पार्ट बना दें इंशाल्लाह, एंड दैट वी शेयर ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विद यू, ताकि जब भी इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी वीड लव to have you on board one of our master classes. Acha, Sharjeel, aap keh rahe, someone told me that Silani Welfare is doing a great work on IT. Sharjeel, there are a lot of people doing a great deal of work with the IT infrastructure, and so yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. बट देन अगेन शर्जील, जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, वो ये कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना एज ए कम्युनिटी कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम इस वक्त टेक्नोलॉजी को लेके कहाँ खड़े हैं, और हम एक्चुअली आगे कैसे मूव करें, क्या स्टेप्स डिजाइन करें, क्या छोटे गोल्स डिजाइन करें, हमने अपस्किलिंग में कितना काम करना है, सेक्टर में स्किल्स डेवलपमेंट को लेके क्या क्या काम करना है. ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल है. और इमरान, थैंक यू वेरी मच. आई विश यू गुड लक विद योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी. एक्सक्यूज मी. You work with handmade products from Sibbi. Thank you so much. आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वी विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आप अगर हमें इनबॉक्स कर देंगे हमारे मेंटरिंग हब के फेसबुक पेज पे, तो हम आपको इंशाल्लाह अपने जो मेल लिस्ट है उसका पार्ट बना देंगे, ताकि आपसे रेगुलरली शेयर करते रहे अपडेट्स ऑन द प्रोग्राम्स. सो शर्जील, जिस तरह बात हो रही थी और जिस तरह हम अपनी कम्युनिटी से कह रहे थे, वो यही कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सब जानते हैं, there is nothing without technology now, and especially कोविड ने जो हमें एक चीज सिखाई, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कोविड के आने के बाद. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और उसके साथ साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी वो ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया है. कि और अगर हम अपनी कम्युनिटी में अपने बच्चों को एंड अगर हम अपने आप को एज मच्योर एडल्ट्स इन द कम्युनिटी ट्रेन नहीं करेंगे, अपस्किल नहीं करेंगे, तो हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे. ऑब्सोलीट हो जाएंगे सिर्फ दुनिया के मैप से नहीं, हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे एज अ कम्युनिटी. पीपल विल फॉरगेट हु वी आर, बिकॉज चीजें बहुत तेजी से पेस अप कर रही हैं. और शर्जील, थैंक यू, आप अग्री करते हैं कि हमें छोटे गोल्स सेट करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी एक और बात याद दिलाने की, वो ये कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं जुएद मिर्जा, वो हमेशा कहते हैं, और हमें एक बड़ी प्यारी बात सिखाई क्या, कि हमें बिग हेयरी और ऑडेशियस गोल्स पे काम करना बहुत जरूरी है. इसके नाम से और कॉनोटेशन से जो हमारा माइंडफुल मंडे नगेट आया था, हमें बड़ा प्यारा फीडबैक मिला था उसको लेके. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु मैसेज्ड अस सेइंग कि हम अब अपने कॉर्पोरेशन, अपनी एंटिटी और अपने बिजनेस के बिग हेयरी एंड ऑडेशियस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं. सो लेकिन हाँ,
اس میں بہت 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 ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا اس وقت کا کرنٹ اسٹیٹس اینالائز کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ ڈپکٹ کر سکیں کہ ہم نے ایکچولی اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے ساتھ چلنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو صحیح طور پہ بڑھا رہے ہیں. بار بار میں کمیونٹی کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں دیٹ وی آر ان دس ٹوگیدر. ہم سب ایک ساتھ ہیں نا. ہم کوئی بھی کام بالکل الگ ہو کے ایک دوسرے سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی کام کروں اور میری کمیونٹی پہ وہ اس کا ریفلیکشن نہ آئے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے پتا آپ سب لوگ اگری کریں گے، شرجیل، سمی، عمران اور بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کریں اور اس کا امپیکٹ ہماری جس طرح گھروں پہ آتا ہے، ہماری فیملیز پہ آتا ہے، اسی طرح ہماری کمیونٹیز پہ بھی آتا ہے نا. تو ہمارے جتنے کام ہیں، ہم کتنے اسکلڈ ہیں، ہم کتنے اسکلڈ نہیں ہیں، ان سب چیزوں کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری کمیونٹیز کے اوپر آتا ہے. تو اوکے، عمران از سیئنگ دیٹ یو ہیو شیئرڈ یور ای میل ایڈریس بائی فیلڈ ورلڈ وائڈ پیجز میسنجر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے فیلڈ ورلڈ وائڈ کے پیج پہ ان باکس کر دیا. دیٹس پرفیکٹلی فائن عمران. اور آپ ادھر بھی کر دیں تو اٹس گوئنگ ٹو کم ٹو اس، ناٹ اے پرابلم انشاءاللہ. اینڈ دین ویل میک شیور دیٹ وی گیٹ بیک ٹو یو اینڈ ویل سینڈ یو دی اگریڈ ڈیٹیلز انشاءاللہ. اور اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جب ایکسپینشن کی ہم جس وقت ہم کام کر رہے تھے، اور جس وقت ہم پاسبلٹیز اور ایونیوز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو آپ لوگ سب سرپرائز ہوں گے اس بات کو لے کے کہ صرف بلوچستان نہیں، بہت سارے سیکٹرز، بہت سارے سیکٹس ابھی بھی جو ہیں وہ باقی شہروں کے کمیونٹیز کے اندر چھوٹے 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 پاکٹس آپ سمجھ لیں، بڑے پاکٹ سمجھ لیں، ایسے ابھی بھی بہت جگہیں اور بہت اسپاٹس ہیں جس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جب میں کہتی ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ تو لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن میں جس بیسک چیز کے بارے میں ہمیشہ فوکس کرنا چاہتی ہوں اور جس بیسک چیز کو ہمیشہ ہمیشہ فوکس میں رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کا سیلف ایکچولائزیشن والا جو جرنی ہے نا، جو بار بار میں مائنڈ فلنس کی بات کرتی ہوں، کہ ہم اس وقت کرنٹلی کس سچویشن میں ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ رینٹنگ بند کر دیں. اور جب رینٹنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سب کو بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اچھا اس سے یہ ہو گیا تھا، آپ نے یہ کر دیا تھا، میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی، فلاں نے یہ کر دیا. وی آل نیڈ ٹو ریئلائز، اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم سو کانفیڈنٹ آپ سب لوگ اگری کریں گے کہ ہم سب نے اپنا وے فارورڈ ڈیزائن کرنا ہے پہلے. تو اس سے پہلے کہ میں یہ ازیوم کروں کہ کمیونٹی کیسے اچھی ہوگی، میرے بچوں کو ایک اچھا رہنے کا انوائرمنٹ کیسے ملے گا، یہ جو صاف ستھرائی نہیں ہو رہی یا جو چیزیں فالو نہیں ہو رہی، سیوک ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہے، یہ سب مجھے صحیح چاہیے. یہ میرا ایسپریشن ہے، میرا وش لسٹ ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا بھی وش لسٹ ہے، لیکن اس سب میں ہم لوگ اپنا کیا پارٹ پلے کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں علاوہ تبصرے کے، سوائے تبصرہ، گپ شپ، ڈسکشن کے، کیا اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی کمیونٹیز کے اندر ایکسپرٹس کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ایکسٹرا کسی بھی طریقے سے میک شور کہ ہم اپنی اپنی کمیونٹیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑنا شروع کریں؟ یہ سب بہت بڑے سوال ہیں اینڈ وی آل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور ہم لوگوں کو بس کرنا ہوگا اپنا وہ والے بات کو کہ یہی سوچ کے کہ بھیا کوئی اور آئے گا کرے گا. We all need to work together on it. So I would want today all of you to please really think about the fact کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنا امپیکٹ بنانا شروع کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ all of us can make a huge impact. مزے کی بات یہ کہ ہم سب بہت بڑے بڑے امپیکٹس ڈال سکتے ہیں. It all starts with baby steps, small steps. So ہم جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے رولز میں، اپنے اپنے پروفیشنل نیٹورکس میں، we can start making those small effects and ripple effects. عمران خان، آپ کا میسج مجھے مل گیا ہے. You are also wanting to publish your success story to a successful entrepreneur. Definitely عمران, thank you so much کہ آپ نے شیئر کیا ہے. And Imran, we would love to hear from you as well, and we would love to hear your story as well. So inshallah, we will try our level best کہ ہم جو 2021 کے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں اس میں ضرور انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں ضرور اپرچونٹی نکالیں گے. And
and the communities that we are probing, जो हम probe कर रहे हैं, जो हम build up करना चाह रहे हैं, वो ये वही communities हैं इमरान, कि जिसके अंदर हमारे लिए जरूरी है ये समझना that together only we can shine, otherwise we will just be lingering around doing nothing. So I think जो हमारे guest हैं, it's taking him a bit tad too long. I think उनको थोड़ा और time लगेगा. I'm sorry you need to wait a little bit for the expert to join. But then until then हम अपनी गपशप लगा लेते हैं. अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को, जो आपको याद होगा हमने अनाउंस किया है अभी रिसेंटली, जो डेवलपमेंट कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमने अनाउंस किया है, उसके लिए बड़ी जल्दी जल्दी हमने जो SOPs और सब चीज़ें बनाना शुरू करी. We've gotten a very very good response. और जितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, they're very excited about the opportunity, क्योंकि ये पहला कोलैबोरेटिव काउंसिल बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि दुनिया भर से चाहे पाकिस्तानी नेशनल्स आप हैं नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं कभी भी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप सब लोगों को, हम सबको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जिसके अंदर जब हम इस काउंसिल का पार्ट बन जाएंगे तो हम प्रोफेशनली नेटवर्क भी कर सकेंगे, काम भी कर सकेंगे और अपने स्किल्स के साथ इन्वेस्ट कर सकेंगे inshallah within the development, the human capital development in the true sense of the word. Thank you again University of Massachusetts director Mr. Arbab Naseebullah, जिनके मीडिया कोलैबोरेटर्स होने की वजह से हमारे लिए बहुत फेयरली आसान रहता है, बहुत स्मूथ रहता है जब भी हम अपने प्रोग्राम्स और लाइव्स जो है वो करते हैं within the networks anywhere on the social media. So IT के कितने experts हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी मुझे बताएं कौन कौन experts हैं within the community who are listening to us, और टेक्नोलॉजी को लेके आप लोगों की grievances क्या है? आप लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी हम लोगों को डैमेज कर रही है, या आप लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी की कोई भी ऐसी एडवांसमेंट जो आप लोगों को अच्छी ना लगती हो? शेयर करें जरा मुझसे, मुझे बताएं जल्दी से, यहाँ कमेंट करें जब तक हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कितना इंट्रीग करती है? बहुत दफा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब हम मिलते हैं तो काफी फ्रेंड्स ने मुझसे भी शेयर किया है कि हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, और जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के साथ सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहे हैं, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हम जब अपनी चॉइस की कोई चीज क्लिक करते हैं, कोई एड देखते हैं, तो उसके बाद जब हम जाते हैं वापस से इंटरनेट के ऊपर सर्फ कर रहे होते हैं तो वही एड्स हमें दिख रहे होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास थोड़े स्लो पेस आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सारी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को अवेलेबल करा देना ही सारा काम नहीं है. बात सारी ये है कि हम अपने आप को विद इन द कम्युनिटी कैसे बिल्ड अप कर सकते हैं. जो फर्स्ट वर्ल्ड की बात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे 5 year olds, 11 year olds, 6 year olds आर प्रोग्रामिंग, देयर कोडिंग, लेकिन हमारे बच्चों के लिए what encouragement are we giving to our children? Do you let your child sit on the laptop to explore? Walaikum assalam, Nagma. It's been such a long while since we got up. Thank you, Saira, for joining us. Thank you, Shayan, for joining us. Thank you, Annie. I got your hi. Thank you so much for joining us every time. Nagma, we've been missing you on our front. मुझे पता है आप अपने रोटरी के काम के साथ बहुत busy हैं, but I think we need to bring you back to the Soulful Sunday series to find out कि भाई क्या क्या हो रहा है. अच्छा, मेरे पास बड़े मजे मजे के मैसेजेस आने शुरू हो गए. शायान बोल रहे हैं one day artificial intelligence will overtake us and might be a threat to us. Most definitely, Shayan. और आपको पता है जो Transformers वाला मूवी है जिसमें हमने देखा था कि रोबोट्स और कार्स और सब चीज मूव कर रहे हैं, how they took over the humans altogether. In all honesty, जब से robots as helps introduce हुए हैं within China, आप लोगों ने देखे होंगे कि they have become a part of our lives already. और you're very right.
they sometimes seem as a threat. Sharjeel कह रहे हैं I used artificial intelligence software in one organization. Mind blowing software. It entirely changed the world. Sharjeel यही हो रहा है. Artificial intelligence इतनी super smart है कि वो एक लेवल पे जाके वाकई स्कैरी हो जाती है. नगमा मुझे पता है आपका जो है वो जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी है, पर इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा कनेक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद माय प्रोग्राम. और शर्जील मैं आपको बताऊं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन है ये भी एक ऐसा एलिमेंट है ना, आप फील करते हैं कि हमें प्रमोट करना चाहिए विद इन आवर चिल्ड्रन, कि हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो अब करियर चॉइसेस ले रहे हैं, अब डिग्री चॉइसेस कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज कवर करना चाहूंगी जल्दी से. वो क्या कि जिस वक्त हम करियर चॉइसेस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में एप्लीकेशंस खुले हुए हैं फॉर सितंबर ऑल्सो, सब लोग बहुत सारे बच्चे जनवरी के लिए एप्लीकेशंस कर रहे थे. आई बीन काउंसलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स और मैं हर जगह यही बात कर रही थी. हम क्या बात कर रहे थे कि जिस वक्त अब आप लोग अपना करियर चॉइस कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ढूंढ रहे हैं या मास्टर्स का कोर्स ढूंढ रहे हैं, या कहीं भी कोई भी चीज एज एन एजुकेशन अपने सीवी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, आप लोग इस चीज को सोच के डेलिब्रेट करके रिसर्च करें कि अब 2021 के साथ आते साथ ही, अब नया साल जुड़ने वाला है, दिसंबर खत्म हो रहा है, 2021 के साथ ही कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो डेवलप हो जाएंगे. सो कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं हम देख रहे हैं. डिजिटल ने बाय डिफॉल्ट हमारे पूरे सिनारियो को टेक ओवर कर लिया है और बगैर डिजिटल स्किल्स के हम लोग जो है वो बाकायदा लूजिंग एंड पे रह सकते हैं अगर हमारे पास डिजिटल स्किल्स ना हो तो. उसके साथ साथ और हमने क्या नोटिस करा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्पेशली क्लाउड टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोडिंग की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है, ये वो चीजें हैं आई फील विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो इन चीजों की प्रोपोगेशन अपने बच्चों के साथ, अपनी कम्युनिटीज के साथ कंप्लीट रखें, जरूरी रखें, एसेंशियल पार्ट बना दें. ठीक है ना. अच्छा, आई फील दैट आवर गेस्ट is having too much of a problem and might not be able to join us today. So which I'm really sorry about, but then hum kuch bhi nahi kar sakte. Actually he was outside somewhere and he was stuck. So yeah, so we will promise to bring him back inshallah in another program. But then again, before I wrap up today's Soulful Sunday, I would want to say this, ke dekhe, technology is something that we all need to make sure is becoming a part of our curriculum. मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को और टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव एस्पेक्ट को अपने करिकुलम्स का पार्ट नहीं बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये चीज नहीं समझा पाएंगे of how essential technology is now. Pakistan is ranked on a very good positive end इंटरनेशनली. जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जब हम बात करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, बहुत तेजी से इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी का अच्छा गिव बैक पॉइंट बन गई है और बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि चेंजेस पॉजिटिव आ रहे हैं. पर एट द सेम टाइम मैं चाहूंगी कि आज के इस छोटे से लाइफ नोट के साथ ये चीज जरूर शेयर करूं कि हम लोगों के ऊपर एज पेरेंट्स, हम लोगों के ऊपर एज कम्युनिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सब मेक श्योर करें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और इस तरह के बहुत सारे जॉनर्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग सो मेनी गुड रिपल इफेक्ट्स इन द कम्युनिटी, उन सबको प्रमोट करें. encourage our children, let's encourage our children to use the best of technology. ये एक और चीज बहुत प्यारी हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने शेयर किया था, वो ये कि एक दफा मैंने सवाल पूछा था कि एज पेरेंट्स हम कितने परेशान रहते हैं ना कि हमारे बच्चे हर वक्त फोनों में घुसे हुए हैं, हर वक्त फोन 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 फोन. सो एक छोटी सी बात है जो समझने वाली है, वो क्या,
ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ڈے اینڈ ایج میں ہم لوگ ہیں، ہر چیز کے ساتھ جو مدعا جڑا ہوا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اگر اپنی آپ کے سکلز کو ٹیکنالوجیکل سکلز کے ایڈوانسز کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو ہم اب آبسلیٹ بالکل ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن. اور شرجیل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر از آلسو تھریٹ فار اس آفٹر سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف سافٹ ویئر مینی امپلائیز فائرڈ اینڈ کریٹنگ ان امپلائمنٹ. شرجیل یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے بہت اچھی بات ریز کی کہ سافٹ ویئرس کے آ جانے سے، آئی ٹی انفراسٹرکچرس کے آ جانے سے اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز کے آ جانے سے ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ود ان لاٹ آف بزنسز. اور ایٹ دا سیم ٹائم شرجیل اس کا پازیٹیو پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہ ہم آج کے دن سے کیوں نہ پرومس کر لیں کہ 2021 میں ہم سب ایک ایک پرومس کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم 2021 میں کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل یا آئی ٹی یا جو ٹیکنالوجیکل اسکل ہے وہ ایڈ کر لیں گے اپنے سی وی کے اندر، اپنے ریزیومے کے اندر. اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کی دیکھیں شرجیل، جو آپ بھی اگری کریں گے اینڈ آئی ایم شیور کمیونٹی میں سب لوگ اگری کریں گے کہ دیکھیں جو ہیومن انٹریکشن اور امپیکٹ ہوتا ہے، جو ایک ہیومن کا کنیکشن ہیومن کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے بعد سکسیسفل سیلز ہوتی ہیں، جس کے بعد سکسیسفل پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی مشین ریپلیس نہیں کر سکتی. مشین انٹریکشن اور ہیومن انٹریکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو چیز ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ہے لیکن وہاں تک ابھی پہنچی نہیں ہے، وہ ہے empathy, the kindness in our heart, which is only the trait of a human heart, شرجیل. وہ کیونکہ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے اور ہمارے جیسے انسانوں کے پاس ہی ہے، ہم پھر بھی مشین سے 2 سٹیپ اوپر رہتے ہیں. تو جب یہ ایمپتھی پلیس میں آتی ہے یا جب یہ ایمپتھی کام کرتی ہے تو ایمپتھی کس طرح کام کرتی ہے؟ ایمپتھی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ لوز نہیں ہوتا، پھر کہیں گلیچز آتے ہیں، کوئی آرڈر خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہاں مشین بیٹھی ہوگی تو وہ تو صرف ریجیکٹ کرے گی نا. آرٹیفیشلی انٹیلیجنس، میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کری کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسمارٹ نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سوچوں سے زیادہ اسمارٹ ہو چکی ہے اور رسپونڈ بھی بالکل انسانوں کی طرح کرتی ہے، لیکن ایمپتھی والا فیکٹر ابھی بھی مسنگ ہے. تو یہ جو ان امپلائمنٹ کاز ہو رہی ہے نا شرجیل، اس کے لیے ایک بہتر، سب سے بہتر چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو سب سے ایزیسٹ چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو نالج لینا شروع کر دیں، ایڈوانسڈ کر لیں، اسکل سیکھنا شروع کر دیں. اور پھر وہ والی بات آ جاتی ہے. السلام علیکم سمن، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہیپی سنڈے، آئی ہوپ یو ہیونگ اے ویری نائس سنڈے. سو اس کے اندر کیا ہے شرجیل کہ اگر ہم لوگ فار انسٹنس جتنے فری کورسز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ MIT اور ہارورڈ اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو آن لائن فری کورسز بھی دے رہے ہیں. دیر آر سو مینی ایکسپرٹس ہو گیون فری سیشنز اور ویبینارز ہوتے ہیں. میرے پاس ریکویسٹس آتی ہیں، ہم شور سب کے پاس آتی ہوں گی، ہم سب کے پاس ماشاءاللہ اتنا سارا ایکسیس ہے، سو مچ آف نالج بیس آن the انٹرنیٹ، کہ ہم اس کو اگر استعمال کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس کر لیں شرجیل. ناٹ اسینشلی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں کوئی مہنگے ڈگریز کا کہ ضروری ہے کہ آپ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ جائیں انرول کریں اور بہت ہی مہنگی ڈگری کریں. بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ریسورسز ہمیں پرووائڈڈ ہیں، جو فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہیں، اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس ان امپلائمنٹ والے ٹرف سے کیسے بچا سکتے ہیں. کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں کسی 1 2 3 ٹاپک کو لے کے. آپ اور میں فار انسٹنس، میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں، اگر میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں، یا میں ایڈورٹائزنگ کے ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں، یا میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں اپنی کمپنی کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، کسی دوسرے کے کمپنی کے اندر، آئی ایم امپلائڈ سم ویئر، وہاں ضروری یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس ڈگری کی نالج ہے، ہمارے پاس ہمارے ایکسپرٹ نالج بیس بلڈ اپ ہوئی ہے ایئرس آف ایکسپیرئنس کو لے کے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ ہم
टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो उस फील्ड के अंदर हो रहे हैं ना, जो चीजें आ रही हैं, जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, जो सर्वर्स आ रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें आ रही है वर्ल्ड ओवर, जो कि अब क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है शर्जील हमें ऑन द इंटरनेट, वो जरूरी है कि हम उसको इनकॉपरेट कर ले। अच्छा, मेरे पास मेरे गेस्ट का मैसेज आया है दैट ही इज जस्ट गॉट इन, व्हिच मींस ही इज गोइंग टू join in a minute. ये तो सुपर्ब हो गया. So he's going to be joining in as well, thankfully. और फिर हम इन चीजों को थोड़ा सा क्लोजर देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह with Asif as well. So जो मैं कह रही थी वो ये कि I think and I'm very confident when I say this कि हम अगर अपने आप को अपस्किल कर लेना, तो अपस्किल करने से हमें सिर्फ फायदा क्या हो जाएगा? अपस्किलिंग में फायदा ये हो जाएगा कि हम लोग उस डिपार्टमेंट के लिए ऑब्सोलीट नहीं होंगे जहां पे किसी नई चीज की बात होगी, किसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो हमारा नॉलेज बेस तो होगा कम से कम. We have to start making sure we read enough substance online which is positive to add to our skills, knowledge and base. Well agreed ना? बिल्कुल यही बात है. So जो बाकी का टेक्निकल स्टफ है जिसको मैं कहती हूँ, वही वाली बात होती है कि भाई छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं, है ना. वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स ना शर्जील. आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप अग्री कर रहे हैं. हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं शर्जील, और उसमें देखें जो एम्पथी वाला पार्ट है ना, वो मशीन कभी नहीं ले सकती. ये बाय डिफॉल्ट मेरी कॉन्फिडेंट फीलिंग है. एआई जितना बढ़ जाएगा वो बढ़ ले, वो जितना एडवांस हो जाए, लेकिन इंसान का ह्यूमन एलिमेंट जो एक इरिप्लेसेबल चीज है ना, जिससे हम एम्पैथी को इस्तेमाल करते हैं, हमारी काइंडनेस होती है जो हमारे क्लाइंट्स को रिटेन कराती है, हमारे बिजनेसेस को रिटेन कराती है, सक्सेसफुल कराती है. आज भी बड़े से बड़े कॉरपोरेशंस, गूगल हो या कोई भी दूसरा कॉरपोरेशन हो, जो कि बड़े बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजिकल मास्टर्स और जायंट्स समझे जाते हैं, वो चाहे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर जाए, वो अपने सारे लोगों को फायर क्यों नहीं कर देते? हालांकि वो कर सकते क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है. वो इसलिए नहीं करते शर्जील के जो ह्यूमन इंटरेक्शन है विद पीपल टू टू बूम द बिजनेस अप, टू बूम द इंडस्ट्री अप, और वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. इट्स इरिप्लेसेबल. और उसके साथ साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट वाला काम है, वो अगर हम करना शुरू कर दें तो हम थोड़ा सा कम्पीट भी कर सकेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब आसिफ इज ऑल, आई थिंक आवर गेस्ट इज हियर. So I would want to add him to the stream, but before I add him to the stream, I would want to introduce him. He's a tech entrepreneur. He wants to be better known as a tech entrepreneur, which is a very positive feeling. And he's doing wonders in this country and also making a mark for Pakistan internationally. And so I'm not going to waste any more time, and I'll ask him to introduce himself when he is added onto the stream himself. Let's quickly add our guest. Assalamu alaikum, Zora. So nice of you. Walaikum assalam. How are you, Asif? Gigi, Allah is extremely kind, doing very well. It's been a very crazy day today, which I did not foresee. So I'm in Dubai right now and traveling back to Pakistan tomorrow. So there's a new normal that we are living in, which is COVID normal. And whenever you're traveling and in foreign lands, or even you're going back to your own country, so you're required to do your COVID test, right? Which is like we're not used to it. And so I just came to Dubai from Saudi Arabia. In Saudi Arabia, you have different laws. The moment you land in, within 24 hours, you are supposed to do a COVID test, and you have to report live. And unless and until you are COVID negative, you cannot meet anyone. So if you're on a business trip, it can be very very difficult. And plus, it's different times. People are very skeptical, when they know that you just traveled from a different country, and are you a COVID positive or you are a carrier? So it's a very different world we are living in right now. So, and tomorrow I'm traveling back to Pakistan. So today I didn't know, that it takes a lot of time for the COVID test in Dubai. It's a drive-through test. So my apology that I, since morning everything kept delaying one thing after the other. Thank you so much, Asif, for making sure that you would be available for the program.
And I'm sorry, I didn't know that you would just, get caught up so bad. Although that we could have rescheduled this then. Nevertheless, but आप मुझे बताएं, ये अभी आप explain कर रहे थे कुछ थोड़ा सा of how the COVID travel's been. How do people look at each other? ऐसे करके गुस्से से कि आप No, carrier हैं. I think How are people people are responding? realizing that this is a new disease, that है ना? we don't have a lot of information about this. Yes. So, and they see that, okay, this person, if he has traveled recently, so he might be a carrier. So they try to keep a distance. Only people who trust you, who know you, have a very good relationship, and they want to meet अच्छा. you, they're the ones who are coming forward. So, अच्छा. I mean, I'll tell you one incident, with respect to, I'm also, alumni council member of IOBM. Okay. And, there were about 7 people that part of IOBM council members. So I'm one of that. So I also, work with people in the MENA region. So my visit was there, and we had to reschedule everything online, despite me being there. So it's a different world we are living in. So Yes. I hope you're doing well, and Yes, I thank you am. very much for Super. inviting me. And Nice. Thank you very much for being time. quick introduction about myself. I'm Asif Jafri, graduated in from IOBM, Institute of Business Management in 2006, and then I worked for companies like Park Libya Holding Company, American Express Bank, Union Bank. I worked for companies like Unilever Pakistan, and then I was also part of Telenor launch team, which is Telenor is one of the largest telecom operators in the country. So I'm very Great. lucky that I was part of their launch team. And then, working in about 6 7 years in the corporate sector, I realized that, maybe I need to build my own companies. I need to, build my own startups and Wow. all. So ठीक है. today, mashallah, I run Pakistan's largest messaging and voice company with the name of eOcean. All big companies in Pakistan, you probably the banks that you deal with, and whenever they send you an alert, transaction alert, whenever you have a transaction in your bank account, so probably that comes through us, and companies like Kareem's of the world, Bikers of the world, Food Pandas of the world, Park Wheels, and the means of the world. So Wow. I'm just giving you a few names that these are the companies, Unilever of the world, Pepsi's of the world. So they all big companies work with us, and now we are Wow. expanding into MENA region, which means that I just came from Saudi, so we've got license to operate in Saudi, and we're also expanding in Wow. Dubai. And idea is to launch our services company in 3 4 countries, in MENA region. Great. So this is really Mashallah. exciting. Build this company from the scratch. Never raised any funding. Never took any loan from people. So this is really a story where many Pakistanis can relate to. That how you can start very small, but if you're persistent, if you're you know if you really believe in your vision, so you can really do anything that you want to do, despite having a I'm lot of sure. challenges like country I'm in sure. Pakistan. So this is बिल्कुल this और is this is what we have done. But in 2015, I was given a scholarship in Silicon Valley. I innovated a product about anti mobile theft. Pakistan में आपको पता है कि snatching वगैरह बहुत होती जी है. So I जी developed जी a product which could eliminate mobile theft. Could eliminate वाओ mobile snatching to a significant level. So I was given a ग्रेट scholarship in Silicon Valley. I went there. I spent some time there. And while I was there, I realized that there are a lot of companies. One of the reasons why Silicon Valley, US, that has produced Googles of the world, Facebooks of the world, यस Amazons of the world, and Teslas and all what. So they have an amazing ecosystem, right? Where they हाँ support young people with great ideas. They mentor them, they give them funding, they give them यस testing platforms. So none of that actually exists in Pakistan. So when I came back, so I started bringing people together, and we wanted to launch a platform, but we launched a platform with the conference, which is momentum.org.pk. You can also Google that, and that's been the largest information technology conference, startup focused conference, innovation focused conference in Pakistan that we've been running since वाओ since 2017. So in ग्रेट that, we aggregate academia, we aggregate, telcos of the world, banks of the world, government regulation, government regulators,
as well as I think we are the only platform where companies like Google, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook, they all come together to support the startup ecosystem and to, Wow. mentoring the young startup. And Zabardast. I think investors and of course all startups. So we since last 3 years we have reached about thousand startups, and every year basically we bring about 300 startups to Karachi. We provide them free transport, stay, and all of Okay. that to come and network with people, understand how this ecosystem works. So this has been a journey, and now I'm working on a new platform which is Kist Pay. हाँ किस्तों पे हमारे कहते हैं ना installment पे. हाँ So बिल्कुल that's kistpay.com. We're launching a handset financing platform. ठीक That है means, in Pakistan, you have to buy your smartphone with full payment, right? हाँ So globally, it's a very common practice. You या go to your telco and you say कि मुझे contract पे चाहिए 1 साल का 2 साल का. So पाकिस्तान में हमने realize किया बिल्कुल कि यार there are about 100. So in Pakistan we have 165, 67 million mobile subscribers. Out of that, ठीक है about 100 million people do not have a smartphone. So imagine your life without having a smartphone. So these are the people who are करेक्ट living bottom of the pyramid, right? Living bottom of the हाँ pyramid. जो बिल्कुल एक एक अपने सर्कल में रह रहे हैं, तो माय आइडिया इज कि यार उन लोगों को अगर उन लाइफ्स को इनेबल करना है, so we need to हम्म, give them internet, we need to enable them with what's happening in the world, because आपका brick and mortar thing will not work if you want to take the education to that sector. It's very difficult. It's if you want to give them quality healthcare, you need to build hospitals, and which is again will take time. It's not impossible, but will take a lot of time. हाँ And टेक entertainment. So टाइम basically, mobile phone. If you give one smartphone internet-enabled device in that home, so हाँ वहाँ पे माँ जो है वो अगर बच्चा बीमार है तो पढ़ भी सकती है, देख भी सकती है, यूट्यूब भी कर सकती है, and there so much that can be done with one internet enabled device in one particular home. एंड बिल्कुल सो बेसिकली उनको भी जो है क्या कहते हैं वो उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो एक साथ स्मार्टफोन जो है वो ले सकें. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर गिविंग देम ऑन इंस्टॉलमेंट, थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे दें, एंड देन जो है ना आप डाउन इंस्टॉलमेंट्स पे जो है अपना स्मार्टफोन ले लें, एंड वंस यू पे दैट. सो बेसिकली अगर आप हमारा फाइनेंशियल सिस्टम देख लें तो फाइनेंशियल सिस्टम इज ठीक है परफेक्टली डिजाइन टू कीप दिस पीपल एक्सक्लूडेड. क्योंकि अगर आपने कभी कोई ठीक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हो या कार फाइनेंसिंग पे लीजिंग पे ली हो, तो व्हाट डू दे आस्क यू, दे आस्क यू योर इनकम स्टेटमेंट. आपको वो बोलते हैं आप यस अपने सैलरी स्लिप दें, आपको बोलते हैं 6 मंथ्स की बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट दें. तो जिन लोगों बिल्कुल के पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं, तो वो उनको क्या है किस तरीके से क्रेडिट मिलेगा, राइट? इट्स इम्पॉसिबल. So this is the new company that I'm building in, and let's see how it goes. But अच्छा really excited to be the space I am in. It's बिल्कुल And recently my company eOcean, which is the largest messaging and voice aggregator in the country, we have recently become partner for WhatsApp. So any company that wants to enable WhatsApp services for their customers, वाओ so we can now enable them. That means so today, how do you deal with your bank or with any company that you deal with? Probably it's a call center. You call in the call center यस or you send them email. यस So imagine हाँ tomorrow बिल्कुल you can talk to them over WhatsApp, and you can do it वाह 24/7, or you can do it from any part of the world. So वाह now we are trying to convert these call centers into chat centers, where people can वाह actually, beside calling in, they can chat over WhatsApp, and they can talk to the business that they want to do, and it's global in nature. So basically, अगर आप यहाँ आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, तो कॉलिंग योर बैंक इज रियली अ पेनफुल प्रोसेस, राइट? इंटरनेशनल नंबर को रिकग्नाइज नहीं करते, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड दे पुट यू ऑन वेट. वो इतनी लंबी आईवीआर चल रही होती है, एंड यू हेट ऑल ऑफ दैट, राइट? दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. So आई नो cutting all of this, so basically bring these technologies are bringing big changes in societies, and I आई एम hope श्योर that our company and our platforms will be able to bring some kind of innovation and easiness in people's life in the country. I'm sure, Asif, and I'm so glad to hear all of this. And I would like to mention the fact that Asif and I go a long way back because we've been in the same institution, the Right. same alma maters. It's we've had the same space in terms of our knowledge and resource base. But nevertheless, what is exciting is Asif is the fact that uh, there's an entire evolution process.
from Sure. where you were, where you started, when you started university, was your vision this, Asif, या ये grow हुआ और evolve हुआ mentors की वजह से? What I think transpired things? so. Basically, you brought up a very important piece, that mentoring is a very very important part of your life. If you get connected to the right people, they not only help you to navigate professionally, but they help you to navigate in personal life as well. So mentors are extremely important, and I'm very thankful to all the mentors that I've had in my life. In fact, while I was here in Dubai, I was recalling all of them, and I sent them personal notes day before yesterday and even yesterday. And I said that wherever I am today, it's because of you guys helped me in my early days, and guided me what to do and believe in yourself, right? Because one of the best things that mentors help you to do is to help you to think big, and not Yes. only to how to think, they also tell you how to go about it. So I've been Huh. very lucky. I've been extremely lucky that I met people. But there's one piece of information that I would like to share, that there was a lot of effort from my side too. you know Yes. I met a lot of my mentors over weekend, where I could have watched Netflix. I could have gone for a movie, I could have gone for bowling and stuff. But I knew that somebody is there and very important in the city, and I need to meet them. And the only time they were offering me to come, like, come to me and meet me here You wouldn't be busy. during lunch हाँ, or during coffee or हाँ, something. हाँ, हाँ. And I was like, okay, I need Yes. to compromise. I need to make a compromise. But I think all those compromises we paid me big time. And today, the list of mentors that I have, I'm extremely thankful to all of them, and I'm extremely thankful to Allah Mia, that that really Allah helped me to meet these people. And all of these people are actually really helping me. And that thing is not done yet, right? As you progress हाँ, in life, it's an everyday. It's an everyday element, नहीं? yeah, so as you progress in life, so you need to keep on making your vision bigger. You try to make a bigger impact, you try to learn new things. The process is never ending process, and you need to also tell yourself, okay, even if you have done something good or great, that's not the end of the world. There's a new chapter that should be opening, that there's a new chapter that will open. So you need to keep your mind open, keep meeting good people, keep meeting new mentors. And I think you have a lot to learn from almost every individual, every human being. So you should never say that, okay, I've learned enough, I can do anything myself. No, I think that's the wrong approach. So mentoring is very important. And if you happen to meet with the right mentor and they agree to help you in your life or in whatever process you are in, I think one should always look up to them, because all the people that I've seen grown in their life, somebody helped them. It was not their Yeah. own success story. Even great of the best companies have Yes. their advisors, Best. Best. हाँ, हाँ, हाँ. And right? I'm sure you will agree, Asif. I'm sure you will agree. मैं और अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जो एक concept है ना, that which has been an older concept within our cultures, and we should be confident and bold enough to discuss the fact that that I do my own thing and I want to be in my own space with my privacy. द पॉइंट इज जहां पे हम कोलैबोरेटिव के लिए कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जहां पे हम ग्रुप और कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है. आई एम श्योर यू वुड एग्री, आसिफ, विद रनिंग सो मेनी ह्यूज वेंचर्स, द फोकस ऑफ ब्रिंगिंग community or a group of people together is what really fuels everything to become that big, hairy, audacious goal. Don't you think so? Yeah, absolutely. So people should know that that all big things that they're seeing today in this world is not built by one man. Okay, it's not like a cricket match that one player coming in and blasting all over and making the team win. So it's बिल्कुल. always a teamwork, right? It's always network of people that coming together and helping you. So it's a two-way process. You're also helping people and people are also helping you. So it cannot Yes. be okay. One more thing I would like to say, that I never started any business of my own, like 100% my business, because I believe in collaboration, right? I believe that जी. if
two people are working together, three people are working together, that's always there's always barakat of Allah Mia, and when people are coming together. And let me quote you, give you example of our prophet, that Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, being the prophet of the messenger of Allah, he was in direct contact with Allah Mia, right? And Jibril used to give message, but even then he used to discuss matter with sahabas, right? That means So, it is extremely important to do mashwara. And how do you do yeah, mashwara if you are single, if you're managing everything, if you don't, how do you mashwara with other people? It's only when you're bringing people together, it's only when you're building community, it's when building advisors, building friends. So basically that's how you do mashwara. And I tell you, 99% of the time when I did mashwara based on the sunnat of our prophet, I always, came up with something better. People always guided me better. I got a good idea, and this is how it works. But otherwise, if you're working alone and you think that nobody shouldn't come in your privacy, and you should be managing your affair, so everything. you can do. I think you can do that, but you can do small things. But if you want to Ha, make only big, this much. if you want to really make big, it's always a combination of people that will come together and work together, and that's how you actually grow. If you have a big, audacious goal, Yeah. you should know that you can't do it alone. I mean, I don't know any company Dead that has sure, one person dead that sure, has done it dead all sure. of it. है ना? Dead sure. Or and this is actually what when we brought mindfulness to Pakistan, Asif, that was the entire vision behind bringing mindfulness to Pakistan, was the fact that we were sure that the gap that remains in between development, and you would agree, being an expert, within in between development and knowledge collaborative, is the fact where we would emotionally be able to self actualize mindfully and then make sure कि हम जो skills सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, और अगर collaborative build करना जरूरी है तो क्यों जरूरी है. I would want to ask you a few questions, Asif. आज मैंने सबको बताया mood elevator पे आपने, मैं आपसे पूछूं आपका mood कैसा है आज वैसे, आसिफ? आपने I अपना don't डे know. तो एक्सप्लेन करा मुझे, but if I'd ask you on the mood elevator, where would you rate yourself? I think despite being whatever happened, I'm super excited that I'm, talking to Oh, you after so many years. And, I know. with your platform, I'm able to talk to many people. And Oh, when okay. you are talking to many people, it's your responsibility to deliver the right message, a message that has a positivity in it and people can take it That's, forward with them. So I'm so I'm happy to in know. all great mode. And one thing that, I'm really working on these days is to find out what is authentic life, you know. So I do yoga, I do meditation, I go for stargazing, and look at the universe, try to observe what's happening. So I've seen life from different perspective. Early part of my life was very struggling, was in college, then I did my first job, second job, third job, and then build companies. So what is now where I am? I really question myself that what is that really makes us happy, and is it money? Is it time? Is it friends or what and what not? So Have you been able to come down to a conclusive? I'm sure it's not that easy, but we would like to hear from an expert like you. Have you been able to draw something within the conclusive end somehow? well, I think human beings have only two things in their hand. One is you can think and you can with the best of intentions, and second thing is to the best of your capabilities, the execution with the best of your capabilities, right? What I'm saying is, number one is, what is the best intention that you can think of for everyone, not just for yourself, The right? best. For Yes. everyone, with what you can think with the best of the intention. And second part is how you can execute it with the best of your capabilities, right? There are Wow. only two things there in your hand. There's absolutely nothing else, Nothing else. right? So if you're doing these two things correctly, right? So you should be very happy with yourself that okay, I'm thinking very best for everyone, right? And I'm doing very best, and results are always in the hand of God. So you leave that part to Alamia. Wow. That's So amazing. That's an yeah, amazing find. Or I, or I, or or and there's another thing I'd like to ask you, Asif. With you
stepping up yourself as as a tech entrepreneur when you wanted to start your journey, जब आप शुरू करना चाह रहे थे at that point in time, अभी भी if you, and I know because आप ecosystems पे काम कर रहे हैं, and we kind of mutually are working the same grounds where we're trying to develop the sector. When we say human capital development, we're trying to make people understand along with us and ourselves कि यार, it's not just developing technologies, it's not just developing infrastructures, it's developing us in ourselves and our paradigms. Again, जैसे अभी आपने बताया कि हम जो वो authentic life वाली बात कर रहे हैं, हम self actualization पे कहाँ हैं, हम अभी कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, so all of that which is the core, it has to be the core focus. उसके बगैर अगर आसिफ हम अपस्किलिंग की तरफ जाते हैं, हम कोर्सेज भी कर लेते हैं, हम सर्टिफिकेशंस भी कर लेते हैं, हम बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, आप सिलिकॉन वैली गए थे, अगर आप इमोशनली पॉजिटिवली रेगुलेटेड नहीं होते आसिफ, तो आपको लगता है कि आप उतना सब कुछ गेन कर पाते हैं एज पॉजिटिव नॉलेज व्हेन यू केम बैक? या आपको लगता है what would you want to add to this question? पॉजिटिव इमोशनल रेगुलेशन कितना जरूरी है आसिफ फॉर अ ह्यूमन टू माइंडफुली मेक श्योर कि वो वाकई में एक पॉजिटिवली सक्सेसफुल सीढ़ी पे चढ़ रहा है? Okay, so I tell you something about entrepreneurs, and the key difference between people who are entrepreneurs and people who are not. The normal Sure. person see things and they believe it, right? And the entrepreneur believes in a world that does not exist today. It will exist in future, but he starts to Yes. seeing that, right? So any entrepreneur Definitely. cannot be negative. He or she has to be extremely positive, because everything will tell you, every person will tell जी, you, this is not possible, this will not work, this will not happen, you will be बिल्कुल, failed, dramatically. But it's your positivity, it's बिल्कुल. your own judgment, own gut that tells keeps you pushing towards that goal. That I mean, take Very example of true. Elon Musk, right? हाँ. He talked about going to Mars. He talked about reusing of the rockets, and everybody made fun of him. But today, if Yes. you look at his car, Tesla, that has a valuation more than all 12 big car manufacturers in the world. So बिल्कुल. so what I'm trying to tell you is that positivity is extremely important, and है ना? entrepreneurs cannot survive without positivity. And So true. whatever they're building, they believe that it will be a source of good for everyone who uses the service or product, right? I'm sure. Um, so the positivity angle is there, and that has to be there. It cannot work without that. And at the end है of the ना? day, you're not building it for yourself. So you basically always need to think that how this platform will help people, in making their life easy. So Wow. I would say that है positivity ना? is the core of any venture that you're trying to build, जरूरी है, because बिल्कुल. अच्छा, future, वही. you don't know what will happen in future, right? In हाँ, बिल्कुल. 2019 December, who would thought that world will close, the entire world will close. We will not be able to बिल्कुल, travel, we will बिल्कुल. not be able to meet people, we will not be able to meet a बिल्कुल. parent. Who could have thought of that, right? So, but we have seen this world. So even So true. within the difficult times, if you are not positive, right, you give up in your हाँ. life. And if you're building a company, if you're building, some ventures, so Yes. the one reality is that which exists. So whatever you plan, when you go in the market, you get a punch in your हाँ. face, right? Wow. You plan something, and life sometimes slaps you on your face. Okay, whatever you were thinking, that's Yes. not true. This is what it is, and you have. So if you're not positive, if you don't So have the true. right courage, right? So you will not So you true. you will not stand up again and start walking in that direction. So बिल्कुल. it's the centerpiece, I would say, the positivity, the mindfulness, that whatever you're doing it for the right Thank you. reason. And one more thing बिल्कुल. that brings me to think about and share with you, that if you're Sure. starting your ventures with the wrong reason, right? So I see many founders, they say, "Yaar, I cannot work with under anyone. मैं किसी को report नहीं कर सकता. My bosses मेरे ऐसे होंगे." ये So बड़ा I tell कॉमन, them, आसिफ, ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट होता है जिस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू कर रहे होते हैं कि हम किसी no, के I नीचे tell काम you नहीं कर that सकते. that is always the wrong reason to start your business, right? Because I tell them that the moment you will start your business, you will realize that everybody is your boss in your company.
It's the other way Yes, around. so true. It's the other way around. So when you are Ah, starting a company and you don't have a lot of funds, so you probably have single resources, right? You have one huh. developer, one HR person, one salesperson. You don't start hiring like hundreds of people altogether without having funding with your side. Are you बिल्कुल. there? Yes, I am, Asif. So your screen actually disappeared. It's only me that started coming in. So I thought that maybe I Oh, lost you. Anyway, so what I let was telling me. you that Okay, this let's these just are all continue. wrong. I'll try and. Can you hear me? Though am I I can hear audible? you. Yeah, you are very much audible. Okay, So, okay, perfect. Then let's what I'm continue. trying to tell ठीक. you is people started for the wrong reason. And when you start your company, so you start working on a very small resources, be it any department, be it any resource. So even if हाँ, the true. PN is not coming to office, even the cleaner is not coming to office, right? So you have to do हाँ. all the things yourself. So who will clean your Yes, office? so true, Who will, Asif. who will make tea for you and for your staff? I mean, so Yes. so basically आपको अपने पीएन की भी बड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है which anyways वैसे ही करनी चाहिए not for जी this reason हाँ, but the बिल्कुल. person is human being so you need to give a due respect and support to that person so So true. when people started with the objective कि यार मैं तो बॉस हूँगा सबका और मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना होगा तो नहीं start your करना business होगा. and you find out that everybody is your boss and when the important timeline is हाँ. given and you need to deliver something and the person is sick or person is not coming so he'll become your boss and then it's a human So management true. it's your business management practices that will help you to navigate all those situations so that is So always true. the wrong reason. And in fact all the people that start their business to make a lot of हाँ. money is again a wrong reason to start your business because in business you मेक will अ लॉट face ऑफ a मनी lot तो of आसिफ सबसे बड़ा पहला गोल अगर कोई डिस्क्राइब करता है ना आप अग्री करोगे जब हम स्टार्टअप्स या इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाते हैं तो वो मेक योर मनी तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होता है ऑल्दो होना चाहिए आसिफ बट आई वुड वांट योर टेक ऑन दिस फॉर पीपल हु आर लिसनिंग No, no. So basically, your why has to be very strong. Why you want to start this thing? If सो your ट्रू reason is to make a lot of money, you don't want to report to anyone. Those are the wrong reasons. हाँ And I can give you in writing that 95 to 99% of the people working with this approach will fail in their ventures. हाँ So the बिल्कुल right reason is always to start with a vision and a mission that how big the impact of your venture and service will be out there on the people's life ब्यूटिफुल that will touch, right? So if I give you an example of why, so हाँ suppose if I ask you that there are four bodybuilders, right, ठीक है and they're standing right in front of you, and ठीक you है have to fight with them so ठीक है your answer will be like, why would I fight with them? ट्रू If I fight with them, they'll probably kill me. So, and I ऑनेस्टली change the situation a little bit, and I tell you that you are a person standing between. You're a person standing in between these four bodybuilders ठीक है and with your mother. Your mother is standing, ठीक or है your father is standing at the back. If you will not fight them, they will kill them. ओ So, what I'm trying to tell you is now you understand the reason. So, before that, you were not willing to go extra mile, you were not willing to sacrifice your life. But when I told you that now these bodybuilders, if you will not fight them, they will kill your parents. So, you will do बिल्कुल nothing else but to fight hard and the fight best that you can, with यस this ऑफ builder. कोर्स Right. ऑफ So you have कोर्स a reason. You have a reason, and you have a reason that is so solid, that is beyond, that is bigger than your life itself, right? To save your सो parents. ट्रू So likewise, सो if ट्रू your startup is you starting your startup, you're starting a company with a vision that I will not report to anyone. I will make a lot of money. Trust me. I'm not saying that everybody will fail, but most of the people will fail with this approach because when you go hit the market, consumer will probably will tell you something. Will hate you, will write bad comments about you, and you say, "Yeah, what is this? Why am I in this mess? And I'll make money some बिल्कुल other way." My other friend is doing this job, that job, and he's also making good money, so I'll go there and work there. I'll close my business. So why सो is ट्रू extremely important? Why is the single most important thing when you're starting your startup? You should figure out why, because when you will start, you'll get a punch in your face, and if you don't have the right answer to that why should I stand back and fight with this, you will give up. And most of the people give up because of this. They start for the wrong reason.
They start for they do it for the fame. They say that being startup CEO is a cool thing. In reality, is the opposite. You need to struggle. You need to struggle beyond what people watching you from outside can possibly imagine. So it's a real different story when you're working and you're really Very building a true. Asif, company. I have another Which is question. Bilkul. sure. Asif, I have another question. Ji, please. I can't hear you, Zora. Zora, can you hear me? I can't hear you. Hello? Hello? Zora, can you hear me? I can't hear you, neither I can see you.